सबसे पहले देखेंगे हम रोटेशनल डायनेमिक्स, फिर देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फिर देखेंगे केटीजी एंड रेडिएशन, फिर थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, वेव ऑप्टिक्स, और ये फिर देखेंगे हम 16 चैप्टर पूरे के पूरे हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रोटेशनल डायनेमिक्स। तो देखो यहाँ पर हम करने वाले 21 का रेफर करने वाले हम 21 में हम करने वाले सबसे पहले डेफिनेशन। तो पेज नंबर यहाँ पर 87 पे डेफिनेशन है, तो पेज नंबर 87 निकालते हैं हम, उस पर डेफिनेशन देखते हैं। या फिर एक बात करते हैं हम, डिस्टिंग्विश देखते हैं हम, डिस्टिंग्विश, या फिर डेफिनेशन देख ले। कमेंट में बताओ, कमेंट में चार्ट करके बताओ जल्दी से कि पहले अपने डेफिनेशन देखे या फिर डिस्टिंग्विश देखे। चैट में बताओ, चैट में। कोई है ही नहीं यार। ठीक है, फिर डेफिनेशन ले लेता हूँ मैं, पेज नंबर 87, पेज नंबर 87। पेज नंबर 87, वेट 87 आ गया 87। आ गई डेफिनेशन। देखो भाई, अब डेफिनेशन लेने वाले हम। डेफिनेशन में पहला कौन सा, देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। A particle is said to be perform uniform circular motion if it is moves in a circle or a circular arc at constant linear speed or a constant angular velocity. इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। A particle is said to be uniform circular motion if it moves in a circle or a circular arc or its circumference at constant linear speed. इतना बोलेंगे तो नहीं चलेगा, सिर्फ इतना बोल दो। If a particle is revolving around the edges of a circle or circumference of a circle with a constant speed is called UCM. बस इतना बोल दो, बस खत्म। बड़ा बड़ा चढ़ा कर बोल रहे इधर। अगर आपको आता है तो बड़ा चढ़ा कर बोलो, अगर नहीं आता है तो सिंपल रखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। इसमें कैसे बोला है, अ पार्टिकल इज सेड टू बी परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इफ इट इज मूव्स इन अ सर्कल, इट सर्कल एट कांस्टेंट लीनियर स्पीड और कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। और का जो हटा है ना, और में से दो में से एक कोई भी लिख सकते हो, या फिर कांस्टेंट स्पीड या फिर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब जब बस इतना ही है, द फोर्स विच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड द फोर्स विच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, दैट्स कॉल्ड फोर्स, दे मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स। बस इतना लिख दोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मगर आपको बड़ा चढ़ा कर लिखना है, थोड़ा सा आपको पॉइंट ऐड करनी है, या फिर थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेटिव बनाना है आंसर को, जो कि रीडर है, जो कि आपके एग्जामिनर है चेक करने वाला, उस पर थोड़ा इंप्रेशन बने, तो ऐसा लिखे। देखो इन्होंने कैसा लिखा, डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स को इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल। देखो इस लाइन का इधर लेना देना नहीं है, फिर भी इन्होंने लिख दिया इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल द सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स ऑन अ पार्टिकल। अब आंसर चालू हो रहा है, which at every instant point radially inward and produce the centripetal acceleration necessary to make a particle move its circular path। ये भी लिख सकते हैं आप। थर्ड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैं आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, हर डेफिनेशन के लिए मैं कम से कम 10 से 15 सेकंड लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। रीड होने के बाद रीड अगर थोड़ा बड़ा हुआ तो 20 सेकंड लग जाएंगे बस। आगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। In the reference frame of a particle performing circular motion, centrifugal force is defined as the frictional radially outward force on the particle, and it's equal its main magnitude to the particle's mass times the centripetal acceleration of a reference frame as measured from the initial frame of reference. Centripetal force towards the center, centrifugal force away from the center। बस ये आपने 100 बार पढ़ा होगा, मुझे पता है। देखो एंगल ऑफ बैंकिंग। Define angle of banking. Angle of banking is the angle of elevation. Sorry. Angle of banking is defined as the angle of banking is the angle of inclination of a bank road with the horizontal is called angle of banking। जो अपना नॉर्मल रोड है उसके ऊपर जितना रोड होगा, मतलब उन दोनों में डिफरेंस कितना होगा, अगर थोड़ा ज़्यादा हुआ तो उसको बोलते हैं बैंक रोड, और ज़्यादा कोई थोड़ा बड़ा चढ़ा कर इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लाइनेशन। एंगल ऑफ बैंकिंग इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ बैंक रोड विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। देन कोनिकल पेंडुलम, और कोनिकल पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम हुज बॉब रिवॉल्व्स अराउंड द हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा आप
खड़ा हुआ। A conical pendulum is a simple pendulum whose bobs revolves in a horizontal circle with a constant speed such that the string describes the surface of a circular area cone. Okay. Next, moment of inertia. Moment of inertia. The moment of inertia of a body about an axis of a rotation is defined as the sum of the products of a masses of a particle of a body and a square of their respective distance from the axis of rotation. I is equals to mr square. Radius of gyration define करो. The radius of a gyration of a body of rotating about an axis is defined as the distance between the axis of rotation and the point at which the entire mass of a body is concentrated. बस इतना भी लिख दो चलेगा. आएगा सपोज सपोज सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन बॉडी गिवन द एक्सिस. ये लिखो नहीं चलेगा. ये लिखोगे आएगा तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं. और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. Define angular momentum of a particle. The angular momentum of a particle can be defined as हर डेफिनेशन के आगे ये है ही. अगर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा है तो थोड़ा सा बड़ा चढ़ा कर डायरेक्ट मत डेफिनेशन बताओ, ऐसे बताओ. द रेडियस ऑफ गायरेशन कैन बी डिफाइन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला है तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी कैन बी डिफाइन एज कोनिकल पेंडुलम बोला है तो कोनिकल पेंडुलम इज सिंपल पेंडुलम एंड इट कैन बी डिफाइन एज. ऐसा बोल दो ना, एक लाइन तुम्हारी बढ़ भी जाएंगी. जैसे कि एंगुलर मोमेंटम पे देखो. द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कैन बी डिफाइंड एट द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल. If a particle of mass m has a linear momentum p, then the angular momentum of a particle with respect to point O is a vector quantity defined as L equals to R into P. समझ रहे हो? ये होता है. अब आगे देखो, आगे हमारा लेसन नेक्स्ट लेक्चर का है. मतलब अभी करीब 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 हुए 7 मिनट और 7 मिनट में हमने एक चैप्टर उड़ा दिया इसे. अब नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में क्या है? प्रेशर मतलब द प्रेशर ऑफ एट पॉइंट इन अ फ्लूइड इन अ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम is defined as the normal force per unit area exerted by the fluid on the surface of infinitesimal area containing the point. Gauge pressure is the pressure exerted by the fluid relative to the local atmospheric pressure. Gauge pressure is equals to P minus P naught, where the P is the absolute pressure and P naught is the local atmospheric pressure. Absolute pressure. The absolute pressure or the total pressure is measured relative to the absolute pressure on the pressure scale, which is perfect vacuum, and it is the sum of gauge pressure and atmospheric pressure. It is the sum of thermodynamic pressure. ओ भाई क्या हो गया? फक. मैग्नेटिक मटेरियल में यहाँ पर दो ही डिफिनेशन दिए हुए हैं. दो ही डिफिनेशन नहीं है, बहुत सारे. देखो मैग्नेटाइजेशन का तो बता दे. मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी डिफाइंड एज द नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन. बाद में मैग्नेटिक इंटेंसिटी. The magnetic intensity is defined as the magnetic induction of a isotropic medium divided by the permeability of the medium. और दो तीन और है. Magnetic susceptibility can be defined as the ratio of magnetization to the magnetic intensity. ये भी है मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी का. और एक और है जो कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी का है. द रेशियो ऑफ रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी का है. द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी to of material to the magnetic permeability in free space is called relative magnetic permeability. और एक है शायद मैग्नेटिक इंडक्शन. द नंबर ऑफ शायद ऐसा कुछ है. नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया through material is called magnetic induction. Magnetic field passing through per unit area through material is called magnetic induction. ऐसा है. दो तीन और यार पढ़ लो, इसमें से दो ही दी हुई, पता नहीं क्यों. ओके. ओ माय गॉड, दैट्स हैपन अगेन. थर्मोडायनेमिक्स के पढ़ लेते हैं हम. थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ एक ही है भाई, क्यों होता नहीं. इंटरनल एनर्जी. डिफाइन इंटरनल एनर्जी.
Internal energy of a system as defined as the sum of the kinetic energies of atoms and molecules belonging to the system and potential energies associated with the interaction between these constituent atoms and molecules. फिर से एक बार internal energy of a system can be defined as the sum of kinetic energies का spelling अच्छा बराबर है of an atom and molecule belonging of the same and potential gradient associated with the interaction between easy. Periodic motion, a motion that repeats itself at a definite interval of time, is said to be periodic motion. The motion that repeats itself at specific interval of time. Khatam. Oscillatory motion, a periodic motion in which the body moves back and forth over the same path, state, or curve between the alternate extremes, said to be oscillatory motion. Linear and simple harmonic motion. Linear simple harmonic motion is defined as the linear periodic motion of a body which the force on the body is acceleration is always directed towards the main position of the body and its magnitude is proportional to the displacement of the body from the main position. Hmm. Periodic time of phasation. Period or periodic time of phasation. Frequency of simple harmonic motion. The number of oscillation takes place per unit time of particle. बस इतना खत्म. देखो इतना बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना बोल दो. The number of oscillation takes place per unit time. बस यहाँ पर थोड़ा बड़ा चढ़ा कर बोल दिया है कि the number of oscillation performed per unit time by the particle excusing simple harmonic motion is called frequency of simple harmonic motion. What is amplitude of simple harmonic motion? The magnitude of a maximum displacement of a particle performing simple harmonic motion from a mean position is called amplitude of simple harmonic motion. Maximum displacement of particle. Progressive wave or transfer wave or wave machining periodic or oscillatory disturbance in medium or vacuum which propagate without any damping and obstruction from one place to another at finite speed. Transverse progressive wave. A progressive wave in which the vibrating of the individual particle of a medium is perpendicular to the direction of propagation of the wave is called transverse progressive wave. Longitudinal progressive wave. When two identical progressive waves having the same amplitude, wavelength, and speed propagate in the opposite direction through the same region with the medium, their superposition under a certain condition create a stationary interference pattern called stationary wave or standing wave. A progressive wave is a periodic or oscillatory disturbance in the medium in the vacuum which propagates without any damping and obstruction from one place to another at finite speed. Resonance. A resonance if the body is made to vibrate an external specific periodic force whose frequency is equal to the natural frequency of body, the body vibrates the maximum amplitude. Beat formation. Beat की definition. Periodic vibration in loudness or in high intensity. The periodic vibration in loudness when uh, two sound notes of slightly different frequencies are sounded at the same time is called beat. मराठी में बताऊं तो क्या है? Periodic vibration of loudness. The periodic vibration of loudness मतलब पिरियड मतलब कुछ स्पेसिफिक टाईमच्या नंतर जे काही आपल्याला आवाज येत असणार when two sound notes of slightly different frequency, जेव्हा दोन जे साऊंड असतात, जेव्हा आपण एकसारखीच्या अलग-अलग टाईमावर वाजवतो आणि त्या दोघांची पण जी फ्रिक्वेन्सी असते ती अलग-अलग असते ना, जेव्हा ते साऊंड वाजतात त्या साऊंडला आपण बीट म्हणतो. बस दुसरं काहीच नाही. जेव्हा ते साऊंड एकाच टाईमावर वाजतील तेव्हा. अ पिरियॉडिक व्हेरिएशन इन लाऊडनेस. व्हेरिएशन मतलब बदल. In loudness when two sounds notes of slightly different frequency, जेव्हा दोन साऊंड अलग अलग फ्रिक्वेन्सीचे मिळतात आणि साऊंडेड मतलब वाजतात ॲट द सेम टाईम मतलब सारख्या टायमावर इज कॉल्ड बीट. याचा अर्थ बीट होतं म्हणजे खायचं बीट नाही रे. बीट म्हणजे हे डेफिनेशन फिजिक्समधलं बीट. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ह मधलं बीट.
period of beat, the in time interval between the successive and successive maxima or minima of a sound at given place is called period of beats. Beat frequency, the number of beat produced per unit time is called beat frequency. Wave optics, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आएगा भी नहीं पेपर में, मैं लिख के दे रहा हूँ. अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है शायद इसमें. करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर कितना है? 9 आई थिंक 9. नहीं 9 के बाद सीधा 10 है. 9 नहीं है भाई. अरे भाई क्या हो गया, ये भाई गलत हो गया. हो गया हमारे अब वेरी शॉर्ट आंसर, सॉरी डेफिनेशन हो गए. अब हम देखते हैं डिस्टिंग्विश. 263. देखो 263 कहाँ पर है? तो भाई क्या हो गया. Uniform circular motion and non-uniform circular motion. Uniform circular motion. The particle in uniform circular motion moves in a circle or a circular arc at constant linear speed and constant angular velocity. A particle in uniform circular motion moves in a circle or a circular arc at constant linear speed. A particle in uniform circular motion moves in a circle at a circular arc at constant linear speed and angular velocity. The tangential and angular acceleration are zero. For a particle non-uniform circular motion in plane, its linear speed and angular velocity both vary with time. Okay, the tangential and angular acceleration are zero. The tangential and angular acceleration are zero. The net linear acceleration is centripetal. The net linear acceleration being the resultant of a radial and tangential acceleration is not radial. UCM and non-UCM. The magnitudes of centripetal acceleration and centripetal force are constant. The magnitude of centripetal acceleration and centripetal force are not constant. Difference between centripetal and centrifugal. Centripetal. The centripetal force is the force required to provide a centripetal acceleration to the particle so that it moves in a circular path. Centrifugal force, the tendency of a particle in its accelerate non-inertial frame of reference is explained by assuming a centrifugal force acting on it. At every instant, it is directed radially toward the center of circular path. At every instant, it is directed radially away from the center with circular path. It is the real force arising from the gravitational or electromagnetic interaction between matter. It is pseudo force since the effect of acceleration of reference frame revolving particle. Streamline flow, turbulent flow. The steady flow of fluid, which is less viscosity less than certain critical velocity, is called streamline or linear